Yes, good afternoon to everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Yeah, good afternoon. So today we have to start with the computer introduction to computer systems. Clear? So yesterday we have discussed upon the primary key constraint and the foreign key constraint. हाँ यस जैस्मिन थोड़ा बता सकते हो क्या होता है ये प्राइमरी की कंस्ट्रेंट एंड फॉरेन की कंस्ट्रेंट? So in primary key constraint, the value must not be null and duplicate भी नहीं होनी चाहिए. गुड 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 वो बेसिकली ऑटोमेटिकली जो कंस्ट्रेंट है वो खुद ही इंश्योर कर लेगा. दैट विल इंश्योर ऑटोमेटिकली. क्लियर? वी नीड नॉट टू हमें ये चेक लगाने की जरूरत नहीं है कि नल वैल्यू ना हो और यूनिक वैल्यू हो. दैट विल बी ऑटोमेटिकली. एंड व्हाट अबाउट दैट फॉरेन की कंस्ट्रेंट? I'm not sure about foreign key constraint. So yes, Amarveer. So when we create links in the table or relationship in the table, then primary key of one table will be the foreign key of the other table. The key which is used to make links. Basically, foreign key points to the other table's primary. फॉरेन की खुद प्राइमरी की नहीं होनी चाहिए. फॉरेन की बेसिकली पॉइंट्स टू दी अदर टेबल्स प्राइमरी की. दैट इज द डेफिनेशन फॉर दिस फॉरेन की. द बेस्ट उसी टेबल में सर वो प्राइमरी की एक्ट कर सकते. उसी टेबल में सर फॉरेन की कैमरा ऑन करो. पहले कैमरा ऑन करो. तू ऐसे क्वेश्चन पूछता रहता है तू विदाउट कैमरा. फर्स्ट फॉलो द रूल ऑफ द क्लास. हाँ जी आप पूछो. हाँ जी सर जो फॉरेन की और प्राइमरी की एक टेबल में एग्जिस्ट कर सकती है. तो एक टेबल में होती है. एक ही जो हमने एग्जांपल की थी बेटा, जो स्टूडेंट टेबल की एग्जांपल की थी, वो स्टूडेंट टेबल में एक प्राइमरी की भी थी और उस टेबल में फॉरेन की भी थी. हाँ सर, एक ही एट्रीब्यूट फॉरेन की भी बने और एक एट्रीब्यूट नहीं हो सकता. एक एट्रीब्यूट कैसे हो सकता है? कौन बताएगा? यस अमरवीर, एक एट्रीब्यूट फॉरेन की और एक वही एट्रीब्यूट प्राइमरी की हो सकता है? सर अकॉर्डिंग टू मी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एक टेबल का प्राइमरी की है तो दूसरे टेबल का फॉरेन की होगा, उसी टेबल का फॉरेन की और प्राइमरी. बेटा देखो जो हमने आई विल शो यू दैट वेरी टेबल ना. अच्छा क्वेश्चन पूछा है इसने. दैट इज मे बी आप लोगों के माइंड में ये डाउट होगी. So I will show you the table to clarify the issue.
Yes. So everyone is requested to keep your camera in the working mode. Yes. So Taranjot, आज तुम different name से enter कर गए हो. You have entered with a different name. Sarvjot. यार मैं ऐसे क्लास के नाम थोड़ी याद रखूंगा. How I will be remembering? एक दिन आप तरनजोत के नाम से एंटर करते हो, एक दिन सर्वजोत के नाम से एंटर करते हो. So my request to everyone is keep your camera active. So I am again announcing the names: Chetandeep, Navdeep Singh, and then is Nishya Ranjan, Muskan, and one more student is there. Clear? So as pointed out by Rajveer, so this is the student table we have. Clear? So in this student table, yes, अमरवीर स्क्रीन दिखाई दे रही है तो ये थम्स अप कर देना जिसको स्क्रीन दिखाई दे रही है. Yes. So clear? तो अभी हम बात कर रहे थे दैट इज नो द डिस्कशन वाज, पहले तो ये है कि एक टेबल में एक की कभी भी फॉरेन की और प्राइमरी की नहीं हो सकती. सिंगल की कैन नॉट एक्ट एज ए फॉरेन की एंड ए प्राइमरी की, बिकॉज इन फॉरेन की वी हैव बेसिकली डुप्लीकेट वैल्यूज. ये देखो जो फॉरेन की है हमारी, इसमें ये वैल्यू है 1001, फिर 1003, फिर 1001 आ गया. 1001 का मतलब क्या है? दैट इज जो ये टीचर है 11001, ये इंद्रवीर को भी टीच कर रहा है और ये अमृतपाल को भी टीच कर रहा है. सो दैट इज व्हाट वी मेंट बाय द टर्म दिस फॉरेन की. So we cannot have the single attribute acting as a primary key and single attribute acting as a foreign key, because दोनों की definition जो है that is it is not same. हाँ जी, दिलबाग आपका हो गया आंसर? दिलबाग सिंह? यस सर. ठीक है, ठीक है, ठीक है. ओके, सो नाउ वी मूविंग टू द टुडेस टॉपिक, दैट इज we have introduction to computer system. So here in this computer system we will discuss about the different basics of the computer. Almost everyone is familiar with all these points. You know, we are not doing it for the first time, we are doing it minimum second time इसको कर रहे हैं हम. Clear? So और आप लोगों को पता है that is in this month you will be also having your pre-board exam. Clear? Date sheet will be given to you, and और जो syllabus आएगा, this syllabus for this pre-board is your full syllabus will be there from for IP. Clear? For the other courses you can check it out the syllabus. ठीक है? And also please finish it up your practical file as soon as possible. ठीक है? 15 by 15th of December तक आप complete कर लो ये practical file. So now moving on to the today's topic. Yes, Amarveer, you can start reading this first PPT. Computer system. A computer is an electronic device under the control of instructions stored in its memory that can accept data, that's input, process the data according to specified rules, program,
on processor and produces its information output and stores the information for future use. Data versus information. Data are the raw numbers or other findings which by themselves are of limited value. Information is the data that has been converted into a meaningful and useful context. Computers are being used extensively nowadays in everyday life, every field, in the form of laptop, desktop, smartphones, gadgets, etc. Clear. So this is the basic definition of a computer system. Clear. For which purpose we are using the computer system? The basic functionality of a computer system is to accept the input, to store the instructions, then is to process those instructions, and finally produce the required output. So we are familiar with the basic functioning of a computer system. Clear. Moving to the second slide. Yes, Jasmine, read the advantages and disadvantages. Advantages of computer: speed, accuracy, huge storage, versatility, tirelessness. Disadvantages of computer: data security issue, computer crimes, health risk, bad impact on environment if not properly disposed of. Clear. So looking at the advantages, I will discuss one of the advantages. ये जो है हमारे पास advantage number 4, versatility. So can someone explain this versatility? What do you mean by the term versatility? So computer has one feature, versatile. So Nischay is ready to answer. Yes, Nischay, ये camera भी बेटा on कर लो, ये camera. Yes. So versatile totally means that computer could actually be used in different ways. We could actually take the advantage of computer in many different ways. We could actually listen to the music. We could actually download the things. That's what versatility really means. Yes. So versatility means being that a device can perform different types of tasks. Clear. So as Nischay has pointed out, for listening songs, for downloading, and we perform पढ़ने के लिए भी यूज कर रहे हैं हम उसको, एंटरटेनमेंट के लिए भी यूज कर रहे हैं. So we can take different tasks from the system. So that is what we meant by this term versatile. I think the rest of the features are quite simple, like speed. Everyone knows it works at a high speed and with greater accuracy, and it provides huge storage also, and tirelessness. So tirelessness is जैसे ये हमारा feature है that after some time we get tired. So this is not the feature of a system. Now moving to the few of the disadvantages. So एक जैसे ये disadvantages of computer है, ये health risk. ये health risk क्या है हमें? What are the health risk from a computer system? So yes, Dilbag. सर आई साइट वीक हो जाती है सर, कंटिन्यूसली हम सर वॉच करेंगे सर कंप्यूटर को. तो सर ये वन ऑफ द हेल्थ रिस्क है. दिस इज वन ऑफ द हेल्थ रिस्क. एनी अदर हेल्थ रिस्क वी हैव अदर देन दिस? सर सिर दर्द होएगा. सिर दर्द भी हो सकता है. गुड. यस. एंड yes, Ishan wants to say something on this. Sir, overuse injuries. हाँ, overuse से हो जाएगा. एक बेसिकली एक टर्म होती है दैट इज बेसिकली रिलेटेड विद द पोस्चर. जैसे अगर हम गलत पोस्चर के साथ कंप्यूटर के ऊपर, मींस अगर हम 5-6 साल काम कर लेंगे, सो यू नो दैट विल बी हैविंग हेल्थ प्रॉब्लम्स ड्यू टू द पोस्चरिंग. अगर हमारा गलत पोस्चर होता है तो वो मतलब 1-2 बार बैठने से तो वो डिसएडवांटेजेस उसका बाहर नहीं आता, बट जब हम ग्रेजुअली 5-6 साल काम कर लेंगे, सो दोज हेल्थ रिस्क कम आउट. तो कोई बता सकता है उसके बारे में? सर्वाइकल. हाँ, ये तो आप बता रहे हो. वेरी गुड. जैसे मींस दिस सर्वाइकल कैन बी, मींस एक टर्म यूज होती है कंप्यूटर साइंस में दैट यू नोट डाउन. दिस इज द होमवर्क फॉर द डे. ठीक है. वो टर्म क्या है? दैट इज जो
कंप्यूटर के ऊपर हमारी बैड पोस्चरिंग के कारण होती है। इफ अवर पोस्चर, बॉडी पोस्चर इज नॉट करेक्ट फॉर वर्किंग ऑन कंप्यूटर्स, तो उसके लिए एक टर्म यूज की जाती है। तो वो सारी टर्म जो है मींस अल्टीमेटली उससे हेल्थ रिस्क ही आएंगे। तो आई विल चेक आउट कि कल कौन इसके ऊपर थोड़ा वर्कआउट करके रिस्पॉन्ड बैक करेगा। सो दिस इज द पॉइंट अबाउट द हेल्थ रिस्क। अभी बताया जैसे हेल्थ रिस्क का, जैसे सिर दर्द हो गया, और आजकल तो बहुत सारे यूज कर रहे हैं, मींस अब तो ये कंपल्शन है टू मेक यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड मोबाइल्स। तो जैसे अभी ये दिलबाग ने बताया, आंखों के लिए भी ये इज मेकिंग द प्रॉब्लम्स लाइक दिस। एक है हमारे पास दिस लास्ट पॉइंट इज दिस बैड इंपैक्ट ऑन एनवायरनमेंट इफ नॉट प्रॉपर्ली डिस्पोज्ड ऑफ। तो कोई इसके बारे में बता सकता है ये किस तरह की प्रॉब्लम है? दिस इज बेसिकली एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। सो yes, Shriya. So when properly not disposed of, these computers and many other electronic devices contain radioactive elements in them, which can cause some environmental issues as well for the humans, as well as for animals, as well as for the environment. Yes. Basically ये जो प्रॉब्लम है that is called e-waste. E-waste is जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के वेस्ट से जो प्रॉब्लम्स जनरेट हो रही हैं, क्लियर, बिकॉज दे कंटेन अ लॉट ऑफ हार्मफुल metals in them, like lead is used, and so many that has a negative impact upon the environment also. तो आजकल क्या है, कंपनीज, many of the companies are basically they have started the work on e-waste. That is when your device expires, so you can send them back. They can collect from your home also. So a lot of initiatives are taken up. So basically the problem is there that lack of awareness is creating a number of problems for this. And next we have one more disadvantages, that is एक है हमारे पास computer crimes. So who will say a bit on this computer crimes? So like nowadays, you know that a lot of pressure is there now on IT devices, ठीक है, क्योंकि अब क्या है, means due to lockdown there is a huge pressure on कि हर कोई जो है means physical form की जगह should use the digital form में transactions करें. So now what are the, basically it has an impact on the crimes, computer crimes. Anyone? Yes, Harshita. Yes, Harshita. Like cyber crimes, theft of personal information on the computer. Yes, yes. थोड़ा elaborate कर सकते हो इसको? Yes. थोड़ा. Yes, yes. So yes, we may take some other ones services now. Yes, Vanshika. सर कंप्यूटर क्राइम्स, फॉर एग्जांपल आजकल डिजिटल पेमेंट काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो उससे हमारे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के पिन्स कई बार थेफ्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद हमारी आइडेंटिटी जो है वो भी यूज़ कर ली जाती है दूसरों के द्वारा। फिर हैकिंग एक मेन कॉज है कि हमारा पर्सनल कंप्यूटर में जो डाटा होता है, हमारी फोटोज, हमारा रिलेटेड डाटा, वो भी जो दूसरे हैं वो यूज़ कर सकते हैं। सो दीज आर द सम ऑफ द क्राइम्स व्हिच आर रिलेटेड. Yes, yes, yes. So due to now the exponential increase in the use of computers, so definitely the crimes with regard to computers, they have also increased in a big way. Clear? So, and one more disadvantage we have, that is the data security issues. What are the data security issues we have? Yes, anyone? Yes, ईशान. सर डेटा सिक्योरिटीज इश्यूज, मतलब हमारा इतना सारा ऑनलाइन डेटा स्टोर हुआ होता है, तो उसको कई बार कंपनीज क्या करती हैं, उसको दूसरे कंपनीज को बेच देते हैं हमारी डेटा को, और उससे उनका प्रॉफिट बनता है। तो ये इससे रिस्क खड़ा हो जाता है कि हमारा जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो शेयर हो जाती है दूसरे लोगों के साथ, अनऑथराइज्ड एक्सेस मिल जाता है लोगों को। ठीक है, this is one of the way of that is the security issue. Other than this,
What are the other data security issues that we have? ठीक है, anyone else? Data security issues are like now whenever we are performing any transactions over the net. So first of all, that is that we should make use of our own device. We should not basically share the devices. Clear? ये नहीं है कि जिसके मर्जी कंप्यूटर से जाके आपने ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर दी. Clear? And that is another is that the private networks are preferred. We should not use अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म करनी है, so we should not make use of public Wi-Fi. We should make use of our own networks. जैसे आपका अपना पर्सनल नेटवर्क है, उसी को यूज करो. You should not use the public networks for transactions. अगर आपने सिंपल नेट एक्सेस करना है, गूगल यूज करना है, फॉर दैट यू कैन मेक यूज ऑफ पब्लिक नेट, बट पब्लिक वाईफाई का यूज कर सकते हैं. बट ट्रांजैक्शंस के लिए वी शुड बेसिकली neglect the use of public Wi-Fi for performing transactions. So these are the few of the points which are related with the data security. Now next is yes, Vanshika, next aap padho. Yes. Any digital computer performs 5 functions in gross terms. Take data as input, store data or instructions, process those stored data, generate the output, control all above steps. So basically, this point we have already discussed that what are the functioning of a computer system is that first it accepts the input, then it stores that very input, and then performs actions on it, generate the output, and we have to basically the system also control all these activities. So these are the 5 major tasks which are performed by a computer system. Now next is with regard to the computing. So today everyone will get a chance. So yes, Ajay Pratap. Computing, the use of computer to process data or perform calculation, or the act of calculating or reckoning through computer is known as computing. So this is again about the definition only. Now the next part is about the evolution of computing devices. So basically here we will discuss that how the basically computers have evolved, and it has now a lot of background is there for this one. So we'll start with Nishchay Ranjan. So Nishchay Ranjan, get ready for this slide. Evolution of computing devices. Abacus is known to be the first mechanical calculating device which was used to be performed addition and subtraction easily and speedily. This device was the first developed by Egyptians in 10th century BC, but it was given its final shape in 12th century AD by the Chinese educationists. Napier Bones, John Napier of Scotland, invented a calculating device in the year 1617 called the Napier Bones. In the device, Napiers used the bone rods for counting purpose, where some number is printed on these rods. These rods that one can do addition, subtraction, multiplication, and division easily. Pascal's calculator. In the year 1642, Blaise Pascal, a French scientist, invented an adding machine called Pascal's calculator, which represents the position of digit with the help of gears in it. Yes. So basically, here we have discussed about the 3 major. One is abacus, that is basically for use for calculations. Then Napier Bones, so one more scientist, and then is Pascal. So Pascal has contributed a lot in mathematics also. You will see the Pascal triangle and a lot of its development in calculus also. So these are the 3 scientists and the evolutions that have taken place. Now next is, who will contribute the next one? Yes. Next is, yes, Jasmine, 11C. Evolution of computing devices. Leibniz's calculator. In the year 1671, a German mathematician
Gottfried Leibniz modified the Pascal calculator and he developed a machine which could perform various calculations based on multiplication and division as well. Analytical engine in the year 1833, a scientist from England known to be Charles Babbage invented such a machine which could keep our data safely. This device was the first mechanical computer. Charles Babbage is also known as the father of the computer. One of the ideas which went a long way in making computers that they are today is the stored program concept which Charles Babbage gave while designing an automatic machine for calculations. That is why he is considered as the father of modern computers. Mark I computer, Howard Aiken of Harvard University, in collaboration with IBM Corporation, designed a fully automatic machine in 1937 to 1944. This machine used electrically actuated switches called relays. So, like up to this point, you can see जो initial जो computers थे, they were basically used for calculations. Clear? If we look at the evolution time, तो first जो 95% computers का काम था, that was basically used for calculations and maybe 5% used for other tasks. But now, if you look at today's scenario, means you can say only 5% computers are basically used for calculations and 95% no, they are basically used for business applications. Clear? पहले business applications के लिए computers का use नहीं था, calculations के लिए use था. So now let's say Chetandeep ready हो? Yes, sir. So yes, next. Evolution of computing device. ENIAC, electronic numerical integrator and computer. The development of vacuum tubes made it possible to build better computers. In 1943, during the Second World War, the ENIAC was constructed as the Pennsylvania University to satisfy military needs. This marked the beginning of development of modern computers. EDSAC is full electronic delay storage automatic calculator, the first full-size stored program computer built at the University of Cambridge, engineered by Maurice Wilkes and others to provide a formal computing service for users. EDSAC was built according to the von Neumann machine principles initiated by Hungarian American scientist John von Neumann, and like the Manchester Mark I became operational in 1949. Yeah. तो जो जैसे ये स्लाइड के जो फर्स्ट पार्ट में ये डिस्कस कर रहा था, मींस जो जनरेशन फर्स्ट कंप्यूटर्स है, दे वर बेसिकली वैक्यूम. उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज होती थी दैट वाज वैक्यूम ट्यूब्स. आपको पता होगा जो पुराने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होते थे, दे वर बेसिकली बेस्ड ऑन दैट वैक्यूम ट्यूब्स टेक्नोलॉजी. क्लियर? एंड उसके बाद जो थे दी सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स. कोई बता सकता है सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में इंपॉर्टेंट क्या था? व्हाट वाज द इंपॉर्टेंट थिंग इन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स? That is basically the use of, yes, Gurleen is ready. Yes, Gurleen, we can listen to her. हम वैल्यू स्टोर कर सकते थे सबसे बड़ी बात. ठीक है. तो जो टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉइंट था इन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स, दैट वाज ट्रांजिस्टर. The use of technology and the transistors were used in second generation of computers. And we move to the next part in the evolution. Clear? And let us say who will be helping it out. Yes, Ashriya, आप ही पढ़ो. Evolution of the computing devices. CDC 6600. The first supercomputer, the Control Data Corporation CDC 6600, only had a single CPU. Released in 1964, the CDC 6600 was actually fairly small, about the size of 4 filling cabinets. It cost $8 million at that time and operated at up to 40 millihertz.
squeezing out a peak performance of 3 million floating point operations per second. Param 8000. In 1991, CTAC rolled out India's first indigenous supercomputer, Param 8000. A multiprocessor machine, Param 8000 was benchmarked at 5 G-flops, making it the second fastest supercomputer in the world at that time. Pratyush. As of January 2018, Pratyush and Mihir are the fastest supercomputers in India with a maximum speed of 6.8 petaflops at a total cost of INR 438.9 crore. So INR stands for, ये INR किसके लिए stand करता है? Indian rupees. No. India. Yes. Indian rupees. Good. So basically, जो first slide में है, that is in the first part of the slide, you can see here the CDC 6600. तो इसकी cost देखो, you can look at the cost ना 8 million. So $8 million. So you know that is a huge cost for this system is there. Clear? And CDC ये क्या है? CDC is basically the Center for Development of Advanced Computing. ये पुणे based organization है, Government of India की organization है, and that basically works on supercomputers. So that is basically in the evolution of computing devices, it has been talked of कि ये start कहाँ से हुई? Abacus जो थी, basically abacus is used for calculations, addition, multiplication, division के लिए use होता था. And presently where we have reached upon, clear? So we have reached upon up to the supercomputers. So that is basically you can say a bit about the lifespan of computing devices. Clear? So now we have reached to the iPhones also, clear? And you can think of this iPhone in the 2007 enters Steve Jobs, one of the most influential years for smartphone. So smartphone by iPhone released in 2007, and it was the year Steve Jobs and the team at Macworld revealed the first iPhone. ठीक है, the first iPhone was released in the year 2007, and this is now the leading company in terms of smartphones. So now with the span of just 13 years, so this is now the leading, and you can look at the market share. The device was offered at 4 GB level and with just $500 and 8 GB at this much. So this is maybe the current price at which these devices are basically launched by. We are just talking of one company. Clear? Now in smartphone we have huge number of companies. We are just talking of one company, and one is this iPhone is the leading American company. इसके अलावा कोई और कंपनी बता सकता है that is there with regard to this smartphones industry में और कौन सी कंपनी है? So निश्चय is ready. Yes, निश्चय. Samsung. Then Motorola. Yes. Chetandeep is ready with one more. Yes. चेतनदीप बता दो, अनम्यूट करके बताओ. सर Vivo, Oppo. Yes. So these are the Chinese company. They are the market leaders in terms of the smartphone segment. ठीक है जी. Then this is important one, the generation of computers. तो मैंने जैसे आपको पहले बताया, जो first generation of computers है, ये जो this can be the tentative time frame जब ये first generation computers काम करते थे from 1944 to 59, and the technology was they were based on vacuum tubes. And in second generation of computers, so they were using the transistors. ये जो जैसे आपको पता है ट्रांजिस्टर का जो है हम तो यूज कहाँ पे और भी करते हैं हम, ट्रांजिस्टर तो अभी भी यूज हो रहे हैं. लाइक ट्रांजिस्टर्स आर यूज्ड फॉर, कहाँ पे यूज था ट्रांजिस्टर का यूज, कोई बता सकता है?
So it is used in the battery, these chargers also. Chargers also, and like radios are based on transistors and like that. Third generation जो है, that is they were using the ICs. Clear? So basically इसमें जो major factor क्या है, एक तो फर्स्ट जनरेशन वाले कंप्यूटर्स का साइज बहुत बड़ा था, सेकंड जनरेशन में साइज और कम होगा, थर्ड जनरेशन में साइज और कम होगा, एंड सेकंड इज कि फर्स्ट जनरेशन में पावर कंजम्पशन बहुत ज्यादा थी, सेकंड जनरेशन में पावर कंजम्पशन और कम होगी, थर्ड में और कम होगी, एंड नॉट विद ईच जनरेशन the power consumption is reducing, and with regard to the first generation the power consumption was high, and also the size was very big in case with the first generation, second generation and third generations. And in fourth generations basically we were using the VLSI. VLSI is very large scale ICs. Clear? So with this the computing power also increased like anything, as well as the size also reduced with regard to the computers. And fifth generation, we can say the fifth generation computers are now AI based. ये हम यूज कर रहे हैं, फिर हम फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर यूज कर रहे हैं या फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर यूज कर रहे हैं? Yes, who will answer this? देखो स्लाइड के अंदर लिखा हुआ है, दैट इज थोड़ा इसको पढ़ के बताना अच्छी तरह. फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स है 1975 ऑनवर्ड्स, वी आर इन फोर्थ जनरेशन, एंड ये फिफ्थ जनरेशन है. तो माय क्वेश्चन इज कि हम प्रेजेंटली कौन सा यूज कर रहे हैं, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर यूज कर रहे हैं? सो गुरलीन इज रेडी टू आंसर. यस गुरलीन, स्टार्ट विद गुरलीन, देन चेतन. सर मेरे हिसाब से हम फोर्थ जनरेशन में है अभी. yes, और क्या कहते हैं फिफ्थ जनरेशन है, उसमें हमें बहुत ज्यादा स्कोप है सर आगे जाने का. तो वो जब तक फुल स्कोप पे नहीं जाती उस तक हम फिफ्थ जनरेशन में एंटर नहीं हो पाएंगे. हाँ ठीक है. यस यस चेतन, do you want to say something on this? फोर्थ जनरेशन. तो जैसे ये केबीसी में सारा जो है आप फोर्थ जनरेशन के ऊपर ही सोचोगे, फोर्थ जनरेशन. यस मिस्टर बाजवा, राजवीर सिंह बाजवा. सर 4.5 शायद. इसने एक नई जनरेशन बना लिया कि ठीक ठीक लगा लो. जैसे मार्केट के अंदर हम रेट लगाते हैं कि 4 वाला रेट भी नहीं लगेगा, 5 वाला रेट भी लगेगा, 4.5 वाला रेट लगा लो सर आप. सो मे बी ही इज गिविंग ए वेरी टेक्निकल आंसर. हो सकता है इसको कोई टेक्निकल आंसर में कन्वर्ट कर दे. सो प्रेजेंटली इफ वी टॉक ऑफ द डिवाइसेस, अगर हम डिवाइसेस की बात करें, सो वी आर, यस गुरलीन इज राइट, वी आर यूजिंग दिस वेरी लार्ज स्केल आईसीज. तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स का हम यूज कर रहे हैं. फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स दे आर ऑलरेडी अंडर डेवलपमेंट. ऐसा नहीं है कि ये अंडर डेवलपमेंट ही है. क्लियर? सो मेनी प्रोडक्ट्स दे आर नाउ एआई बेस्ड प्रोडक्ट है. जैसे ये अलेक्सा है, सो अलेक्सा विल नॉट बी फॉल अंडर द फोर्थ जनरेशन, इट विल फॉल डेफिनेटली फॉल अंडर द फिफ्थ जनरेशन. तो ऐसा नहीं है कि इसके अंदर सिर्फ एक्सपेरिमेंट ही हो रहा है. And in so many areas their products are coming into the market also, and you can take the example of Alexa also. So that is one of the example of AI based device home. Clear? So that was about generation of computers. Next is basically the block diagram of the computer. So we have already discussed in great length that what are the major functions of a computer is to receive the input, and then is to produce the output, and in between to store and process the information, and as well as control all the activities. So 3 activities are happening here. Controlling is happening here, storage is happening here, and third is processing is happening here, and then you see the final output here. So this is called the block diagram of the computer. Clear? So इसके अंदर जो parts हैं, input devices, output devices, and then you have CPU. CPU के अंदर पे क्या है, memory unit है. Clear? That is main memory भी है, and secondary memory अभी इससे बाहर चली जाएगी. Clear? So for somewhere inside some diagram you will find the secondary memory also. And this input devices, output devices, and storage we will discuss in the upcoming class. Yes, any questions on today's lecture or anything you want to add? Yes, Kisi. Or in this month you will find your pre-board. So tentatively they will start from 18th of December, and get ready for your
and this pre-board exams, as well as with regard to IP, you will find the whole syllabus in the exam. पूरा syllabus आएगा exam के अंदर. Yes. किसी का बेटा कोई question है, so you can ask. And also utilize the time for making the practical file also. Practical file complete कर लो, and whenever there is a practical file की final date आएगी या theory exam की आएगी, so that you are ready and you can focus on the final exam also. So I think no question is there. So thank you very much for patiently listening to the class. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.